हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन में नंबर्स का, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का और डिलीटिंग फंक्शन का कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नंबर्स कैसे प्रिंट होंगे। सो a इक्वल 12 एंड b इक्वल 34। सिंपली प्रिंट a and print b. It will simply printed in a simultaneously. अगर हम इसमें डिलीटिंग फंक्शन का यूज करेंगे तो हम यूज करते हैं del का। अगर हम del a करके प्रिंट करेंगे a अगेन, फिर हम प्रिंट करेंगे b, तो यहाँ पर एरर आएगी जो कि हमें बताएगी a हमारा डिफाइनिंग फंक्शन नहीं है क्योंकि हमने a को डिलीट कर दिया है इसलिए। और अगर हम पहले इसमें प्रिंट b करेंगे बाद में प्रिंट a करेंगे तो हमारा b प्रिंट हो जाएगा लेकिन a में नॉट डिफाइन आएगा क्योंकि a हमारा डिलीटिंग फंक्शन है। और नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन। हर एक टॉपिक को हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन। हाउ कैन ऐड टू नंबर्स a equal 12 and b equal 17. How to add these two numbers? Simply we can take c equal a plus b and print c. The output comes the sum of a and b. Next we will discuss how to print a subtraction in Python. So we will take a equal 12 and b equal 7. Then c equal a minus b. Simply print c. The output comes a difference between a and b. Next हम चेक करते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। a equal 7 and b equal 24. How can c equal a multiply by b equal, when we print c then output comes 168. It is a multiplication number. Similarly, we can use a division function, division operator, when a equal 25 and b equal 5. So c equal a divided by b, then print c. The output comes 0, 5.0. The value in division value comes in point, but when we use a floor division, then output comes a equal 25 and b equal 5. In floor division, we can take a double divisible sign and the output comes 5. In floor division, the digit cannot come in a decimal form. Next,
we will discuss about a modulus. How can you use a modulus in Python? A equal 25 and B equal 17. C equal a mod of B. Then print C. The modulus comes 8. Next, we will discuss about a exponential form. A equal 5 and B equal 3. When we use a exponent form in Python, we can simply use double multiplicable sign in. So print C. The output comes 125. Thank you guys. Please support me and subscribe my channel, like videos, and thank you very much.